जस्ट बिगिनिंग से बता देता हूँ। इकोसिस्टम, पहले तो दो टाइप का इकोसिस्टम की बात थी, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम, है ना बेटा। और उसमें से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है ना। इसमें forest, grassland, desert are some example of terrestrial ecosystem. Pond, lake, wetland, river, estuary are some example of the aquatic ecosystem. Crop field and aquarium is considered as man-made ecosystem, that is artificial ecosystem or man-made ecosystem. Okay, ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट में बेटा, ये जो बिगिनिंग वाले पार्ट में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये जो थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर लिया था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसमें मेन जो पॉइंट्स था दैट वाज स्ट्रैटिफिकेशन। ये वाला पॉइंट था स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स आर कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें थोड़ा ध्यान रखना, ट्रीज ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रैटा और लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs that is the second, herbs and grasses occupy the bottom layers. Okay. Beta, book is visible. अच्छा, इसमें से जो अच्छा आई विजिबल है बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। अभी जो हम लोग को पढ़ना है कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम are seen to function as a unit when we consider the following aspect, that is the productivity. प्रोडक्टिविटी के अंदर हम लोग को जो ध्यान रखना है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो जो हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। और दूसरी चीज है, यहाँ पे इस पैरा में ये चीज ध्यान रखना है कि जो इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए हम लोग के चार एस्पेक्ट जो है ना, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में ध्यान रखना है ना। अभी क्या है, जो पॉन्ड ऐसे एक एग्जांपल है, शैलो वाटर बॉडी इन व्हिच ऑल द अबव मेंशन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड। तो दीज आर द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ओके, और दूसरा जो है, यहाँ पे मतलब पॉन्ड में ऑटोट्रॉपिक कौन है, बुक से इसीलिए एक एक लाइन रीड करना ही सही रहता है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी एंड फ्लोटिंग, submerged and marginal plants found at the edges. Consumers are represented by the zooplanktons, free swimming and bottom dwelling forms. व्हाट्सअप बुक विजिबल है ना बेटा? इसको एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसमें से देख भी लेता हूँ। हाँ, दिखाई तो दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और इसमें एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, जो हम लोग पहले भी पढ़े हैं बेटा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है एनर्जी का। उसके बाद प्रोडक्टिविटी का जो मेन पॉइंट्स में है, प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, amount of biomass or organic matter, biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis, एक्सप्रेस करते हैं g to the power -2 और एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेट भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी हो सकता है। ठीक है, जब तुमने बेटा इससे पहले आंसर लिखा था बेटा, उसमें ओनली तुमने लिखा था g to the power -2, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसका जो यूनिट्स है इन टर्म्स ऑफ वेट g to the power -2 और एनर्जी। हाँ वर्षा दिखाई दे रहा है बेटा पेज? यहाँ पे दोनों लिखा था बेटा, जो मैंने एक बार बताया था ना कि इसके यूनिट को लिखो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इसमें भी वही चीज है, g to the power -2 या to the power -1 as well as थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ। To compare productivity of different ecosystem, it can be divided into gross primary productivity GPP and NPP, दो चीज था, and net primary productivity. Gross primary productivity of an ecosystem is the rate of production of organic matter during photosynthesis. Considerable amount of GPP is utilized by the plants in respiration. जब हम लोग ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फाइंड करने के लिए माइनस रेस्पिरेशन, तब क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए ग्रॉस प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेशन जो है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉप्स, हर्बीवोर एंड डिकम्पोजर्स। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए अवेलेबल होती है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। ओके ठीक है, इसके बाद हम लोग का था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनोवेटिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया। ये किस किस के ऊपर, कुछ एनवायरमेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अबाउट 170 बिलियन। जस्ट तुमने पहले मिनियल लिखा था, उसके बाद बिलियन लिख दिया था। ओके करेक्ट हो गया था। ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डिस्पाइट ऑक्युपाइंग 70% of the surface, the productivity of the oceans is only 55 billion tons। और उसमें एक इंटरेस्ट क्वेश्चन है, जो मेन रीजंस फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन विथ ओशन, उसमें से ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज लेस नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स बहुत कम होती है। ठीक है, अभी डिकम्पोजिशन के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो पहली बात है कि डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन। Decomposer break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrient, and this process is called decomposition। तो वर्षा पहले अभी चैट बॉक्स में लिख दो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन। हाँ वर्षा लिख दे बेटा, आज क्लास को रिकॉर्ड भी कर दे रहा हूँ। डिकम्पोजिशन, decomposer break down complex organic matter into inorganic matter, organic to inorganic, inorganic substances
हाँ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इसमें थोड़ा लिख देना बेटा जो तुमने लिखा। बेटा देखो इसमें थोड़ी ये भी लिख देना जरूरी है। तुमने लिखा ना जो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक, ये लिख देना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ओके, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, अच्छा, dead plants remains such as leaves, bark, flowers and dead remains of animals including fecal matter constitute detritus, which is the raw material for decomposition. So detritus is the raw material for decomposition. Important steps in the process of decomposition, important steps जो है नहीं तो process involve fragmentation, leaching, catabolism, humidification and mineralization. डेट्रीवोर्स के बारे में यहाँ पे दिया, डेट्रीवोर्स। ओके, वर्षा लिख दिया, करेक्ट है, ठीक। अच्छा, डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स दैट इज अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रियस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। हाँ बेटा अभी एक बार फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन ऑफ फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का डेफिनेशन लिखो बेटा। हाँ ठीक है, तुमने लिख दिया detritus break down the detritus into smaller particles. This process is called fragmentation. Okay, ठीक है, good. By the process of leaching, water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salts. Bacterial and fungal enzymes degrade detritus into simpler inorganic substances. This process is called catabolism. तो अभी डेफिनेशन लिखो बेटा, व्हाट इज कैटाबोलिज्म। इस डेफिनेशन में detritus into simpler inorganic substance you have to write, and basically इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स। अब बेटा लिखो व्हाट इज कैटाबोलिज्म। ऐसी बेटा लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, बार बार चैट बॉक्स में लिखोगे। ठंडी मौसम आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जाग नहीं पाते हैं, क्यों पता नहीं। हाँ, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड detritus into simpler substances. This is known as, हाँ ठीक है बेटा, inorganic, simpler inorganic substance. Okay. Catabolism के बाद it is important to note that all the steps of decomposition operate simultaneously in the detritus. Humidification and mineralization occur during decomposition in the soil. Humidification as well as mineralization occur during decomposition into soil. Humidification leads, next page. पेज इज विजिबल बेटा, एक मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, humidification leads to accumulation of a dark color amorphous substance called humus.
तो लिखो व्हाट इज ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस एंड उसके क्वालिटीज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिखना है। यहां से लिखोगे डार्क कलर amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action, undergoes decomposition at an extremely slow rate. हाँ बेटा लिखा उसको। ये देखो जो डार्क कलर्ड amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition. ओके देखो बेटा जो तुमने लिखा उसमें dark color amorphous substance that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at an extremely slow rate. Okay, that is correct. और ये जो accumulations होते हैं, this process is known as humification. Okay, clear बेटा? Understood? This is called humification. Now is being colloidal in nature, it serves as a reservoir of nutrients. So its nature is, it is colloidal in nature. Colloids है. Serve as a reservoir of nutrient. Humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. तो colloidal in nature, serve as the reservoir of nutrients. ये nutrients के काम करते बहुत। और दूसरी बात है humus further degraded by some microbes and release inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. Okay, so you must write what is mineralization. Batsa, you write what is mineralization. और कोई बेटा शायद इसमें भी रिकॉर्डिंग में भी ज्वाइन हो बेटा लिख देना। सपोज यू आर ऑफ 12th क्लास तो लिख देना बेटा व्हाट इज मिनरलाइजेशन। इकोसिस्टम चैप्टर है, चैप्टर इज इकोसिस्टम। यहां से यहां तक लिखोगे बेटा humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. इसीलिए सुबह सुबह उठ के चैट बॉक्स में लिख दिया करो। ये सही लिखा, गूगल मीट में सही है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स occur by process called mineralization. Okay, good. ठीक है, ऐसी करके याद होगा बेटा, बार बार चैट बॉक्स में लिखना। Decomposition is largely an oxygen requiring process. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. Detritus तो हम लोग पहले ही पढ़े ना बेटा, detritus ये सारे था जो फेकल मैटर, ये सारे detritus था। Flowers, bark, leaves, these are called detritus. Okay, तो इस जगह पे लिखा गया डिकम्पोजिशन। विजिबल है ना वर्षा, बुक इज विजिबल। अच्छा, तो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग
process, the rate of decomposition is controlled by chemical composition of the detritus and climatic factors. बेटा इसको लिखो बेटा चैट बॉक्स में. The rate of decomposition is controlled by, कौन कंट्रोल करते हैं? 2 factors. What are the 2 factors which control decomposition is controlled by? लिखा बेटा, वर्षा लिखे. Decomposition is controlled by, rate of decomposition controlled by chemical composition of detritus and climatic factors. Okay, correct. ऐसे लिखेगा तो याद हो जाएगा. In a particular climatic condition, decomposition's rate is slower if the detritus is rich in lignin and chitin, and quicker if the detritus rich in nitrogen and water soluble substance like sugar. तो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ ना बेटा. डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो. डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा इफ द detritus इज रिच इन lignin, okay, and chitin. Okay, good. And it will be quicker when if the detritus is rich in nitrogen and water soluble substances like sugars. Okay, तो ये जरूर ध्यान रखें. क्विकर में कौन होगा? शुगर. और स्लोअर में कौन होगा? दैट इज लिग्निन एंड चिटिन. लिग्निन एंड चिटिन. ओके, और क्विकर में दैट इज नाइट्रोजन, रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर. नाइट्रोजन एंड शुगर. ओके, उसमें क्विकर है. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर are the most important climatic factors that regulate the decomposition through their effects on the activities of soil microbes. Warm and moist environmental favor decomposition, whereas low temperature and anaerosis inhibit decomposition, resulting in build-up of organic materials. Okay. तो यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट डिकम्पोजिशन को फेवर करते हैं. लो टेम्परेचर और एनारोबिक इनहिबिट, जिस एनारोबिक मान लो कंडीशन प्रेजेंट हुआ तो इनहिबिट डिकम्पोजिशन, रिजल्ट इन बिल्डअप ऑर्गेनिक मटेरियल्स. ओके, तो एनवायरमेंटल फैक्टर हुई. इसके बाद एनर्जी फ्लो. एनर्जी फ्लो के बारे में, एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली source of energy for all ecosystem of the earth. Of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation. तो कौन सा बेटा? of the incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation per. We know that plants and photosynthetic chemosynthetic bacteria, autotrophs, fix sun's radiation energy to make food from simple inorganic materials. Plant capture only 2 to 10% of the per. इसको थोड़ा ध्यान रखना. 10th क्लास में हम लोग ओनली पढ़ते थे 2%, लेकिन यहाँ पे plants capture only 2 to 10% of the per, and this small amount of energy sustain the entire living world. So it is very important to know how the solar energy captured by the plant flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producer either directly or indirectly. So you find unidirectional flow of energy
from sun to producer then to consumer. अच्छा अभी एक चीज लिख के बताओ बेटा, what amount of what percentage of solar energy is captured by plant? करेक्ट आंसर लिखिएगा बेटा, व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी, गलत हो जाएगा। प्लांट्स देखो बेटा तुमने लिखा श्री विदना 2 to 10%, हाँ ठीक है, लेकिन ये बात तो नहीं है ना 2 to 10% ऑफ द पार तो पहले डिफाइन किया ना। इंसिडेंट देखो बेटा ये जो है ना ये इसके रेस्पेक्ट में है, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसी का ओनली 2 to 10% एब्जॉर्ब करते हैं। बात क्लियर वर्षा? थोड़ा लिख दो, अभी चेंज करो बेटा। हाँ क्या लिखना है उसको लिख दो, समझ में तो आ गया, लिख दो बेटा। क्या 2 to 10% जो तुमने लिखा 2 to 10%, आगे क्या लिखोगे? यस ऑफ पार, गुड हो गया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सोलर एनर्जी कैप्चर, तो हो गया, ये तो क्लियर है। अच्छा ये जो यहाँ पे बोलते हैं कि इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेटा याद है व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है नहीं है? यस और नो? डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही तो है ना बेटा? क्या इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? यस, जो इसके अंदर इसको तो फॉलो करते हैं। Further, ecosystems are not exempt from the second law of thermodynamics. They need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. Increasing disorderliness उसको क्या बोलते थे? Entropy. The green plant in the ecosystem terminology are called producer. In a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plants. Likewise, primary producers in an aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae, and higher plants. The chain or wave. एक मिनट प्रोड्यूसर हो या हायर प्लांट्स होगा। You have read about the food chains and wave that exist in nature, starting from the plants, producer, food chains, and rather waves are formed such that an animal feeds on a plant and other animals, and in turn, ये तो पहले 10th क्लास जैसे है। इसके बाद हम लोग को ये पढ़ना है, all the animals depend on the plants directly indirectly for their food needs. They are hence called consumer or heterotrophs. If they feed on the producer, the plants, they are called primary consumer. If the animals eat other animals, which in turn eat the plants or their produce, they are called secondary consumer. Likewise, you could have the tertiary consumer too. Obviously, the primary consumer will be herbivores, common herbivores, insect, bird, mammals in the terrestrial ecosystem and molluscs in aquatic ecosystem. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं ना बेटा। इसके बाद consumer that feed on these herbivores are carnivores and more correctly called primary carnivores. Though secondary consumers, those animals that depend on the animals carnivores for food are labeled as secondary carnivores.
A simple gauging food chain is depicted below. ग्रास से क्या गोट, गोट के बाद मैन, ऐसी करके आगे आगे चलते चला जाएगा. दैट इज ग्रेडिंग फूड चेन. ये तो जस्ट 10 स्टैंडर्ड का ही है. अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर करिएगा जल्दी है. which are known as secondary carnivores. Which are known as secondary carnivores. लिख के बताओ बेटा. Which are known as secondary carnivores. Which are known as secondary carnivores. सेकेंडरी कार्निवोर का डेफिनेशन लिखना है. व्हिच आर नोन एज सेकेंडरी कार्निवोर्स. एनिमल्स दैट, ठीक है, ओके, सही लिखा. दोज एनिमल्स व्हिच डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड. ठीक है. अभी डेट्रियस फूड चेन डीएफसी के बारे में है. begins with the dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. Okay. These are also known as saprotrophs. Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste materials into simple inorganic materials, which are subsequently absorbed by them. तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो detritus food chain begins with what? Detritus food chain begins with. Detritus food chain begins with. लिखो बेटा, चैट बॉक्स में लिखो. कोई यूट्यूब में भी प्रेजेंट हो, लिख दो बेटा. सॉरी बेटा, फांसी आ गया. ओके, ठीक है, डेट्रियस फूड चेन का लिख दिया तुमने. In an aquatic ecosystem, जीएफसी, बेटा जीएफसी का फुल फॉर्म क्या है बेटा? जीएफसी का फुल फॉर्म लिखिए. ग्रेजिंग फूड चेन. गुड. मेजर conduit for energy flow. As against this, in a terrestrial ecosystem,
में बेटा पेंसिल थोड़ा हट गया। As against this terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC. Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organisms of DFC are prey to GFC animal. And in a natural ecosystem, some animals like cockroaches, crows, etc. are omnivores. This natural interconnection of food chain make it a food web. तो इसमें जो फूड वेब जो बनता है दैट इज बेसिकली जीएफसी एंड डीएफसी का मतलब इंटरकनेक्शन के वजह से। ये थोड़ा ध्यान रखें। जीए जो मतलब फूड वेब बनने का मेन रीजंस क्या है? देयर इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन डीएफसी एंड जीएफसी। ओके, organisms occupy a place in a natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with other organisms. Based on the source of their nutrients and food, organisms occupy a specific place in their food chain that is known as trophic level. Producer belong to the first trophic level, herbivores, primary consumer to the second, and carnivores that is third trophic level. ये जो इस तरीका से दिया गया है, ठीक है बेटा, डायग्राम पूरा बना हुआ है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है जैसे हम लोग पढ़े हैं ना बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर first topic level that is plants, phytoplankton, grass and trees. Second topic level herbivores, primary consumer. Then secondary consumer, tertiary consumers. Examples: diagrammatic representation of the topic levels in an ecosystem. इकोसिस्टम में टॉपिक लेवल के बारे में। ये तो यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछे तो ठीक। दूसरा जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेट एट ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल, जो हम लोग पहले 10th क्लास में पढ़े हैं। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट इज कन्वर्टेड टू detritus or dead biomass that serve as energy resource for decomposition. Organisms at each topic level depend on those at the lower topic levels and for their energy demands. Each topic level has a certain mass of living material at a particular time called standing crop. बहुत important definition. Each topic level has a certain mass of living material at a particular time which is known as standing crop. तो लिख दीजिएगा बेटा स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग क्रॉप? चैट बॉक्स में लिख दीजिए जल्दी। हाँ बेटा लिखो, स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन दिखाई तो दे रहा है ना बेटा। स्टैंडिंग क्रॉप बोर्ड में काफी बार आ चुका बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन। स्टैंडिंग क्रॉप
each topic level has certain mass of living material that is called biometric level. ठीक है. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया जाता है कि देखो the biomass of a species is expressed in terms of fresh and dry weight. Measurement of biomass in terms of dry weight is more accurate. The number of topic levels in a gauging food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each topic level from the lower topic level. In nature, it is possible to have that is many topic levels. Producer, herbivores, primary carnivore, secondary carnivore in the gauging food chain. तो ओनली क्या होता है बेटा 10% लॉ के वजह से क्या होता है कि नंबर ऑफ टॉपिक लेवल लिमिटेड हो जाती है. ओके, और एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में कितना है, ओनली 10% एनर्जी फ्लो करते हैं. और हॉट टॉपिक लेवल 90% एनर्जी रख देते हैं अपनी यूटिलाइजेशन के लिए. ओके, उसके बाद इकोलॉजिकल पिरामिड. एक मिनट, इसका एक बार सिलेबस को चेक कर देता हूँ. हाँ, इकोलॉजिकल पिरामिड तो सिलेबस में है और उसके बाद ही एक ही टॉपिक है. बस बस बस. हाँ बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड सही वाला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है. Ecological pyramids, you must be familiar with the shape of a pyramid. The base of pyramid is broad and narrows down at the apex. One gets a similar shape whether you express the food or energy relationship between the organisms. At the defined topic level, the relationship is expressed in terms of the number, biomass and energy. बेटा 3 टाइप के हिसाब से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ओके, का रिलेशनशिप with the number, biomass and energy. The base of each pyramid represents the producer or the first topic level, while the apex represents the tertiary or top level consumer. 3 ecological pyramids that are usually studied: pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy. तो व्हाट्सएप पर लिख दो 3 ecological pyramids are. What are the 3 ecological pyramids? अब बेटा चैट बॉक्स में लिख दो what are the 3 ecological pyramids. नंबर गुड, सही है. नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी. ओके गुड. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया और इन्वर्टेड पिरामिड. अच्छा, यहाँ पे देखो कि एक एग्जाम्पल है इन्वर्टेड पिरामिड. इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ दिखाई देते बेटा? इन्वर्टेड पिरामिड जैसे वाली. Where you can see inverted pyramid. हाँ, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में लिखो बेटा
where you can find inverted pyramid. Biomass in an ocean, okay, good. और यहाँ पे तो 10% लॉ यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। और मतलब जितने सनलाइट आता है 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब कर लेती है। और हर बार एक जीरो कम हो जाएंगे बिकॉज 10% ही इसका जो है उसका 10% नेक्स्ट में जाएगा, यहाँ से 10% इसमें जाएंगे, लास्ट में एनर्जी कम हो जाता है, इसीलिए टॉपिक लेवल भी कम हो जाती है, ठीक है। और ऊपर की तरफ क्या होता है, जो नंबर ऑफ एनिमल्स भी कम हो जाती है। यहाँ पे any calculation of energy content, biomass or numbers has to be include all organism, all topic level. No generalization we make. अच्छा, यहाँ पे तो जस्ट रीडिंग टाइप का ही है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखो। In most ecosystem, all the pyramids of number, energy and biomass are upright. Producers are more in number and biomass than herbivores. Herbivores are more in number and biomass than the carnivore. Also, energy at the lower topic level is always more than the higher topic level. There are exceptions to the generalization. If you are count to, that is number of insect feeding in a big tree, what kind of pyramid would you get? Now add an estimate of the number of small birds depending on the insect as also the number of larger birds eating the smaller. तो इस जगह पे भी थोड़ा डिफरेंट मिल जाते हैं, जैसे मान लो इन्वर्टेड पिरामिड में मिला था। The pyramid or biomass in a sea also generally inverted because biomass of fishes far exceeds the phytoplankton. Because जो सी में जो फाइटोप्लैंक्टन हो है उसका नंबर जो मछलियां है उससे भी कम होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकते बिकॉज द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम ए पर्टिकुलर टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल। Some energy is always lost as heat at each step. Each bar is in the energy pyramid indicates the amount of energy present in each topic level in a given time or annually per unit area. वाला पैरा भी आसान है। उसके बाद however there are certain limitations of ecological pyramids such as it does not take into account the same species belonging to two or more topic levels. It assumes a simple Ncert, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, saprophytes are not given any place in the ecological pyramids, even though they play a vital role in the ecosystem. So, limitations of ecological pyramids. लिख दो बेटा, what are the limitations of ecological pyramids? चैट बॉक्स में लिखिए, दिस इज द लास्ट टॉपिक। ये वाला सिलेबस में नहीं है, व्हाट्सएप पता है ना बेटा, ये वाला सिलेबस में नहीं है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सॉरी, इकोलॉजिकल सक्सेशन, सॉरी बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं, सेम पीसेस बिलोंगिंग टू। और एक पॉइंट,
सैप्रोफाइट आर नॉट गिवन इन प्लेस। ये वाला पॉइंट लिखो बेटा। ओके ठीक है, अभी मैं इसके जो एमसीक्यूज भेज देंगे उसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी भेज देता हूँ एमसीक्यू ग्रुप में। क्वेश्चन दिखाई देगा यहाँ से, और क्वेश्चन ही यहाँ से दिखा देते, अभी याद हो जाएगा। हाँ बेटा देखना क्या जो है उसमें, एक मिनट, क्या क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या? वर्षा क्वेश्चन इज विजिबल। अच्छा ओके, उसमें दिया था कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन विल। एक मिनट, इसका थोड़ा सा वो कर देता हूँ, रोटेट कराता हूँ। स्क्रिप्चर्स गुड। एक मिनट, घूम नहीं रहा क्यों? हाँ बेटा अभी हो गया, बड़े हो गए, ठीक है। तो इसमें दिया गया था, एक मिनट बेटा, माइक्रो थोड़ा चैप्टर चेंज हो गया, एक मिनट, अभी मैं चैप्टर को चेंज करता हूँ। इकोसिस्टम, यस। हाँ बेटा इस तरीका से अच्छा है, देखते हैं क्या आंसर आता है। कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम, एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा, देखता हूँ, यस। T4 ऐसा करके दिया, T4 T3 T2 T1 है ना, ये सारे गिवन है। ओके, और if T4 is an equivalent to 1000 joule, what is the value of T1? हाँ बेटे तो बहुत आसान है रे, कितना होगा बेटा? ऑप्शन दिखा दूं? हाँ बेटा, T4 में 1000 है, T4 में 1000 है, T4 is equivalent to 1000 joule. What is the value of T1? Question not clear. Okay, एक मिनट, अभी क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन तो क्लियर लग रहा है। एक मिनट बेटा, क्या हुआ देखते हैं, एक मिनट में मेरा मोबाइल में चेक करता हूँ।
वर्षा भी क्लियर है क्या? अच्छा ठीक है बेटा, देखिए मैं थोड़ा बार बार मूव करा रहे थे इसीलिए क्लियर नहीं था। ओहो सॉरी। ओके ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट था। अच्छा क्वेश्चन को मैं भेज देता हूं तो सही रहेगा, ठीक है? क्वेश्चन जो है, हाँ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? अभी अभी हुआ क्या? विजिबल है क्या? अच्छा मैं उसमें लिख के बताना सही रहता है। अच्छा प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो सही रहेगा। एक मिनट, दो चार प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, रुक। पेज का प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, रुक। दो मिनट टाइम लगेगा, प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ तो आसान हो जाएंगे। प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। तुम लोग थोड़ा रिवीजन कर लो, अभी प्रिंट आउट निकाल देता हूँ। हाँ बेटा प्रिंट आउट निकल गया बेटा, अभी एक मिनट बेटा, प्रिंट आउट निकल जाए। अच्छा इसमें आंसर को भी हम छुपा सकते हैं, बस फोल्ड कर दिया, बस बुक काटा था। हाँ क्या क्वेश्चन विजिबल है? क्वेश्चन इज विजिबल नाउ?
सी ऑप्शन करेक्ट बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट, ओके गुड। और एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज विजिबल। वर्षा, क्वेश्चन नंबर 3 इज विजिबल। अच्छा ओके, ये वाला सही मेथड है बेटा, सारे क्वेश्चन भी हो जाएगा। इन एन इकोसिस्टम द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज, ये तुम्हारा सारे नीट का 2024 का है, 1000 एक्स है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। व्हाट वुड बी द जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड टॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। क्वेश्चन को पढ़ लो, क्वेश्चन को अच्छे से दिखाई दे रहा है। In an ecosystem with the net primary productivity of the first topic level is 1000x kilocalorie per meter square year, what would be the gross productivity of the third topic level in the same ecosystem? First option x by 10, second option second option x, तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन सी है 10x। सुन लीजिए, देखो net primary productivity at the first topic level would be the gross primary product for the second topic level. Net primary at the second topic level would be gross primary productivity of the third topic level. Therefore 100x would be gross primary productivity at the second topic level, and 100x into 10% would be the थर्ड टॉपिक लेवल, दैट विल बी 10x। उसका 10% होगा ना बेटा? अच्छा ओके, बाकी तो बेटा इसका तो वो वाला है, ये वाला तो टॉपिक हट गया इस बार। अच्छा ये वाला को बताइए बेटा, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एन कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल at any given time is referred as, इसको क्या बोलते बेटा? The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, potassium, calcium present on the soil at any given time is referred as, ऑप्शन ए। गुड, सही है। ये बेटा बहुत आसान है, ये वाली, ये 2023 में नीट में आया।
In the equation GPP minus R equal to NPP, GPP is the gross primary productivity, NPP is the net primary productivity, R is referred as, R क्या चीज है बेटा? ऑप्शन ढक दिया। R क्या है बेटा? चैट बॉक्स में लिखिए रेस्पिरेटरी। ओके गुड। अच्छा देखो सुनिए, इसमें लिखा रेस्पिरेटरी कोसेंट, रेस्पिरेटरी लॉस, रिप्रोडक्टिव एलोकेशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव दैट इज रेडिएशन, दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस, है ना बेटा? क्लियर? दैट इज रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, अच्छा इसके बाद तो बेटा बहुत लंबी वाली क्वेश्चन है, ये आया तुम्हारा 2023 में नीट में है। Identify the correct statement. A is the detrivores perform fragmentation. Detrivores perform fragmentation. दूसरा है humus is further degraded by some microbes during mineralization. Third is water soluble inorganic nutrient go down into the soil and get precipitated by a process called leaching. ठीक है, the detritus food chain begins with the living, detritus food chain begins with the living organism. Earthworm break down detritus into smaller particle by a process called catabolism. गलत हो गई। हाँ बेटा, इसमें चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन कौन होगा करेक्ट, कौन कौन स्टेटमेंट करेक्ट है? ई वाला तो गलत है, ई वाला भी गलत है, डेटियस लिविंग ऑर्गन नो, डी वाले भी गलत है। अच्छा ए वाला डेटिव परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन, ये तो करेक्ट है। ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स डिग्यूमिनेशन, बी भी करेक्ट है। वाटर soluble inorganic nutrients go down to the soil and get precipitated called leaching, ये भी सही है। तो तुम्हारा ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों, डी और ई गलत है, तो तुम्हारा आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है, ठीक है ना बेटा? तेरा भी डी ऑप्शन था वर्षा, तेरा कौन सा ऑप्शन था? हाँ ये भी से, अच्छा ठीक है गुड, ओके गुड। ये वाला तो सिलेबस में नहीं है, इसको हटाते। ये वाला भी सिलेबस में नहीं है, अभी सिलेबस से हट गया ना। यस, ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे, 2022, ठीक है। हाँ 2022 कुछ, अरे जेई वाले का भी ऐसी पढ़ाई सही रहेगा यार। कार्बन डिसॉल्व 55 बिलियन टन्स, अच्छा। एनुअल फिक्सेशन कार्बन थ्रू फोटोसिंथेसिस 71%, पावर कैप्चर बाय प्लांट्स 4 into 10⁻³ प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस 2 to 10%। ये तो हो गया, ये तो इसमें साथ आ जाएंगे, बी वाला फोर्थ के साथ आ जाएगा, है ना? बी वाला फोर्थ के साथ आ जाएगा। एक मिनट, बी वाला, एक मिनट, हाँ सॉरी, सी वाला फोर्थ के साथ आ जाएगा, पावर कैप्चर सी वाला फोर्थ के साथ आ जाएगा। सी वाला में फोर्थ कहाँ है? एक ही है, हाँ एक तक सीधे आंसर आ जाएगा। वर्षा सीधे आंसर आ रहा है ना, सी वाले जो है ना, पावर कैप्चर बाय प्लांट्स 2 to 10%, एक ही ऑप्शन में सी दिया है ना? तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, है कि नहीं वर्षा? क्लियर? ओके ठीक है। ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 13, ये 2022 में आया। The amount of biomass organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called, क्या बोलते हैं इसको? हाँ वर्षा क्या बोलते हैं इसको?
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, गुड, प्राइमरी प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, वहां पे भी स्टेटमेंट कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है बताना है। Statement 1, decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substance by microbes. Statement 2, decomposition is faster if the detritus rich is lignin and chitin. कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन, ठीक है, ठीक, ओके। अच्छा, क्वेश्चंस हो गया कंप्लीट, ठीक है बेटा, अभी क्लास एंड करता हूँ, ठीक है बेटा वर्षा, ओके, क्लास एंड करता हूँ।